Namaskar, welcome to Indian News. This is Priyal Mishra, your news presenter for the day. Let's take a quick look of today's headlines. Shocking murder case in Goa. Mother kills 4-year-old brutally. Installation of a 500-kilogram bell in the temple Ayodhya. President Draupadi Murmu presents Cleanliness National Award in Delhi. Earthquake tremors felt in Jammu and Kashmir. Now let's move forward towards the bulletin. Rejecting the invitation for the Congress Pran Pratishtha of Ram Temple, Karnataka CM Siddaramaiah stated, "We are not against Lord Ram. We all follow Lord Ram and visit Ram temples in our villages. He built the Ram temple and we have no issue with that. But the BJP is politicizing it and we are opposing the politics." See, we are not against Sri Ramchandra. We are all followers of Sri Ramchandra. We want to build Ram Mandira in our villages. We are for Sri Ramchandra. But they are making politics out of this. They have built Ram Mandira, okay, no problem. But they are making politics. We are opposing politics. Indore, the country's cleanest city, has won this title for the 7th consecutive time. This time it shared the top spot with Surat. The announcement was made on Thursday at the event held in New Delhi. President Draupadi Murmu presented the award to Chief Minister Dr. Mohan Yadav, Urban Administration Minister Kailash Vijay Varghia, Indore Mayor Pushyamitra Bhargav, MP Shankar Lalwani and Commissioner Harshika Singh. Union Minister Hardeep Puri was also present after maintaining the top position for the 7th time in the Swachh ranking. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav said, "I would like to congratulate all the residents of the state as the Cleanliness Award has given to the Indore Municipal Corporation. It sends a message that we should maintain cleanliness in the country." यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो स्वच्छता पुरस्कार का क्रम जारी रखा और मैं मध्य प्रदेश की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि हमारा राज्य में पहला नंबर का पुरस्कार स्वच्छता नगर के नाते से इंदौर नगर निगम को मिला है। मैं नगर निगम इंदौर के सारे रहवासियों को, सारे जनप्रतिनिधियों को, सारे स्वच्छता से जुड़े हुए छोटे से छोटे कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने लगातार 7वीं बार ये बड़ा पुरस्कार जीता है। और ये देश में अपने आप में एक संदेश भी देता है कि हमको अपनी अवेयरनेस भी बनाए रखना चाहिए और स्पीड भी बनाए रखना चाहिए। मैं अपनी ओर से राज्य की जनता को, 8.5 करोड़ जनता को दोबारा एक बार हम फिर स्वच्छता संरक्षण में दूसरी रैंक पे आए हैं, मैं बधाई देना चाहूँगा कि इस नाते से कोशिश करेंगे कि अगली बार हम नंबर 1 पे आएँ। एक बार फिर पूरे आयोजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। The active western disturbance is bringing a sharp cold spell to Madhya Pradesh. Dense fog and a biting cold were experienced in several districts on Thursday. On Wednesday night, Datia remained the coldest in the state. The minimum temperature here dropped to 4.8 degrees. Gwalior recorded 5.5 degrees. Guna recorded 8.8. Rewa recorded 8.4 degrees as the minimum temperature. The highest night temperature was in Narmadapuram at 15.7 degrees. According to the weather department, today the weather is expected to change in Indore, Ratlam, Khandwa, Chhindwara, Seoni, Balaghat, Jhabua, Dhar, Betul, Burhanpur. Light drizzling may occur. On Thursday afternoon, tremors of an earthquake were felt in several districts of the Kashmir Valley, including Srinagar. The Poonch district in the Jammu division experienced tremors of an earthquake. Earthquake tremors were felt in Jammu and Kashmir. Tremors of an earthquake were felt in several districts of the Kashmir Valley, including Srinagar. On Thursday afternoon, the Poonch district in the Jammu division experienced tremors of an earthquake,
Moreover, the tremors were also felt in the Delhi NCR region. As soon as the tremors were felt, people rushed out of their homes and offices. According to the National Earthquake Science Center, the epicenter of the earthquake was in Afghanistan. It registered a magnitude of 6.1 on the Richter scale. While there is currently no information about casualties or damage from anywhere. In Chhattisgarh's Raigad district, a maid along with two accomplices executed a loot at a residence. The three girls tied up the owner before making an explicit video of the woman and threatening to go viral if anyone was informed. Subsequently, they looted cash and approximately 8 lakh rupees worth of jewelry from the house between 9 and 11 pm. The incident occurred at the residence of Dinesh Kumar, a resident of Surya Vihar colony. Dinesh Kumar is originally from West Bengal and has been living in Raigad for the past few years with his wife. It is reported that a girl came 2 days ago seeking work at Dinesh Kumar's house and the wife hired her. During this time, the girl plotted the loot. She then shared her plan with two friends and them wearing masks stormed the owner's house in a cinematic style. Carrying cash and jewelry, they filed the scene. CCTV cameras captured their escape. As soon as information about the incidents was received, senior police officers along with cyber cell team reached the spot. They questioned family members and the maid. The family revealed that the girl had started working at their home just 2 days ago. On the third day, she executed the plan. The Raigad police conducted a swift investigation and with the help of the cyber cell apprehended all three girls near the railway station. From the suspects, the police recovered 50,000 rupees in cash, jewelry worth 5 lakhs and stolen goods totaling 8 lakhs. Let's take a break. Stay tuned with India News. हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती। क्या बताऊं, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है, पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना। मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपने बच्चे को इंडो IT स्कूल के बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है? अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वहीं बिजी रहता है। सबसे अच्छी बात, वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है। हाइजीनिक ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है। तुझे पता है, वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती है। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात, वहाँ खेलकूद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मीन्स होम अवे फ्रॉम होम? हाँ, इसलिए तो मैं भी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडो IT स्कूल है कहाँ? इंडो IT स्कूल, कुरुद रोड, कोका भिलाई। फोन 9303561235। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005.
प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 7415674157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। Welcome again after the break. Let's get back to the bulletin. Farmers reaching the rice procurement center in Balot district are facing distress as extra rice ranging from 200 grams to 3 kilogram is being fraudulently added to their sacks, affecting their rightful share. Despite complaints, no action is being taken against the troubled farmers as reported by an investigation done by the Indian News. The entire incident pertains to the Dondi Development Block, one of the service cooperatives of the Maryadit Gram Ghotia Rice Procurement Center in the district. Approximately 1,100 registered farmers from 5 to 6 villages sell their rice here. On Wednesday, farmers who came to sell rice at the center were being deceived. The rice of the farmers was being weighed more, leading to complaints by the farmers. After the complaint, the collector formed an inspection team which found excess rice being weighed in each sack, ranging from 200 grams to 3 kilograms. The farmers demanded action. आज मैं गोठिया कभी तो नहीं अपन धान ला बेचे बार मंडी में आए हैं। आज देखे मैं यहाँ की स्थिति है तो बहुत गड़बड़ है, बहुत अति गड़बड़ है। कभी तो नहीं 2 दिन 3 दिन के कभी तो नहीं धान के खरीदी ले दिन नाप किया, जिसे नाप करने के बाद में कभी तो नहीं 2-2 3-3 किलो कभी तो नहीं ओभर बोरा पीछे आवा थे। तो कितना गद्दारी है ये समिति के समिति प्रबंधक के कभी कितना बड़े गद्दारी है, कितना कमजोरी है जो कभी तो नहीं। और ये किसानों के घाटा कर थे, किसानों के हित में नहीं है, किसानों के अनहित में हावे। हाँ, अभी अधिकारी जांच करेगा, अभी अधिकारी जांच में करे रहा है, वो सही पाए गए है और सामने में कभी तो नहीं ये सही प्रूफ हो गए है। कितना बोरा? हाँ, कितना बोरा तौलिए? हमारा 40 बोरा मोर हरे, 21 बोरा और भाई के हरे और 50 बोरा एक जन भाई के हरे। कभी तो नहीं ये सब किए में कभी नहीं 2-2 किलो का अंतर पाएगी इससे। आप क्या चाहते? मैं कहा चाहता हूँ शासन से अनुरोध करता हूँ कि कभी नहीं सही न्याय किसान ला मिलना चाहिए और सही न्याय। अब ऐसे अधिकारी ऊपर कार्रवाई कठिन से कठिन कार्रवाई होना चाहिए सर। यहाँ ना एकदम झुकती पूरा जो वजन है धान के हमार पूरा वो जमीन मारा थे और कम से कम ना 1 किलो 1.5 किलो निकला थे कट्टा पीछे। अभी अधिकारी मन आधीन तक अधिकारी मन जांच करा थे तो देखी तौल के पूरा देखी नाप ला 40 किलो बैठा थे, कितने 42 किलो बैठा थे। On the installation of a 500 kilogram bell in the courtyard of the Ram temple in Ayodhya, Champat Rai, the Secretary General of the Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra, said this is an art of India and our effort is to keep it alive and encourage it. Now we will see where it is installed in the courtyard. The consecration of the temple will take place on January 22. On the installation of a 500 kilogram in the courtyard of the Ram temple in Ayodhya, Champat Rai, the Secretary General of the Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra, said, "This is an art of India and our effort is to keep it alive and encourage it." Now we will see where it is installed in the courtyard. The consecration of the temple will take place on January 22nd. कि इस समाज की पुरानी परंपरा यही नगाड़े बनाने की है। कुछ समय पहले ये लोग आए थे सब, तब इन्होंने कहा था हम ये देना चाहते हैं। मैंने सोचा था कि भाई आजकल इसको कौन उपयोग करता है, आजकल तो सब मैकेनाइज्ड हो गया, उसमें अपने आप बचता रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया है सब। हाँ, सब हमारे पास भी है छोटा सा। हाँ।
तो भी ये एक भारत की कला है, वो जिंदी रहे, इनको प्रोत्साहन मिले। ये एक अच्छा काम किया है, लाए हैं, और अभी हम सोचेंगे इसको कहाँ मंदिर में स्थापित किया जाए। इतना जरूर है, कंस्ट्रक्शन के काम में आज वहाँ कोई स्थिति इसकी रखने की नहीं है। इसकी रक्षा पानी से भी करनी है, इसकी रक्षा बंदर से भी करनी है। तो अब दोनों रक्षा कैसे होंगी, और इसका ये दर्शनीय है। आज के युग में शायद अयोध्या में से बजाने वाला कोई नहीं मिलेगा। A heinous crime unfolded in Goa as a mother ruthlessly murdered her innocent 4-year-old. New revelations are emerging in this case while the father performed the final rites. The mother herself committed the murder of the 4-year-old in Goa. The father conducted the last rites in Bengaluru on Wednesday. In this murder case, a woman named Suchna Seth was arrested by the police from Chitradurga, Karnataka. Today, the police took Suchna Seth for regular medical examination. Later, she was brought back to the Calangute police station in Goa. Government doctors overseeing the autopsy revealed that the child's murder had occurred more than 36 hours before and the cause was strangulation. There were no signs of external injuries on the body, suggesting the possibility of suffocation using a pillow. The identity of the taxi driver has been revealed as Roy John D'Souza, a resident of North Goa. He informed the media that he received a call from the hotel receptionist on the night of January 7th. He was told that Suchna Seth needed to go to Bangalore and the fare was fixed at Rs 30,000. According to him, he reached the hotel with a companion around 12:30 am. Suchna stated that she had urgent work in Bengaluru. Subsequently, they set out for Bangalore that same night. On the Goa-Karnataka border, Suchna got stuck in traffic for 4 hours. During this time, he was surprised by Suchna's behavior. This is where the story of Suchna being apprehended unfolded. Suchna did not like to meet her husband and his child. She did not want her husband to meet their son. The police suspect that this could be the reason why Suchna murdered her son. In August 2022, information had also accused her husband of domestic violence. She stated that her husband subjected both her and her son to physical abuse. The cycle of fluctuations in Chhattisgarh's weather continues. There was drizzling in Raiganj in the morning. The possibility of light rain here during the day was indicated. Dense fog persisted in Amarkantak until 9 am. The wind was coming from the north. In the next 3 days, both day and night temperatures will drop. There is a possibility of a 3 to 5 degree drop at night and a 1 to 2 degree drop during the day. Clouds covered Raipur and surrounding districts on Wednesday, bringing mild coolness. Although after 2 p.m. the sun came out, keeping the temperature about 3 degrees above average. Meanwhile, there was fog in Gorela, Pendra, Marwahi district, causing a temperature drop of 6 degrees. Similarly, in Bilaspur, the day temperature was 3 degrees higher and the night temperature recorded 6 degrees above normal. This led to no respite from the cold both at night during the day. According to Meteorological Department, there will be a decrease in night temperatures in the coming days. Congress state in charge Sachin Pilot arrived in Chhattisgarh for a 2-day visit, and after the meeting of the state Congress committee, he held a press conference. Sachin Pilot in a press conference said that Rahul Gandhi is starting the Bharat Jodo Nyay Yatra from January 14. The Manipur government has given partial permission for this journey. This journey is not for politics. It will stay in Chhattisgarh for 5 or 6 days. The condition of the country in the last 10 years will be highlighted during this time. There is a political strategy of pressure and aggression happening now. Sachin Pilot commented on India alliance, expressing concern for the BJP. The purpose of the journey is to connect with the people, and the Lok Sabha results will be in our favor. PC Chief Deepak Baij and veteran Congress leader were present at the press conference. छत्तीसगढ़ में आज हम सब लोग
प्रदेश कार्यकारिणी की सभा में भाग लेने जा रहे हैं और 2 दिन का हमारा कार्यक्रम है। आप सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव बहुत निकट हैं और आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए पूरा संगठन, पूरी पार्टी, सभी नेता कार्यकर्ता तैयार हैं। इसी का जायज़ा लेने के लिए संगठन को और दुरुस्त कर लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करने के लिए और पूरे प्रदेश भर में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको नए जोश के साथ चुनावी मैदान में उतारने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। ये इस राज्य की जिम्मेदारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हम सबको दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम दुगनी ताकत से वापसी करेंगे और भाजपा ने जो बातें बोलकर ये चुनाव जीता है उनकी जवाबदेही हम तय करेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे और एक मजबूत विपक्ष जो हम लोग हैं उसका एहसास जनता को ज़रूर होगा। नौजवानों को, किसानों को, अगड़े पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब लोगों को साथ लेकर हम लोग आगे चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर अभूतपूर्व परिणाम हम लोग लेकर आएंगे। एकजुटता से पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी काम करेगी, इस संकल्प के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। राहुल गांधी जी का भी जो यात्रा शुरुआत होगी 14 तारीख को, उसका भी आगमन छत्तीसगढ़ में होगा, उस पर चर्चा करेंगे और कल प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हमने रखी है। जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ से फीडबैक लेंगे और आने वाले उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी हम मंथन इस दौरे पर करने वाले हैं। That's it for today. Keep watching Indian News. Thank you and have a great day.